क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 8 साल बाद फाइनली अपना कोच और कैप्टन तब्दील किया है। वो वाहिद टीम है जिन्होंने 8 सीजन एक ही कोच और कैप्टन के साथ खेले हैं। देखना यह है कि इस चेंज से क्या उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है कि नहीं। वेलकम टू द शाइनी साइड। मैं हूं आपका होस्ट फरीस। मेरे साथ आज हैं काजी उमैर अली, जो कराची में ही मौजूद हैं। काफी बड़े क्रिकेट पे नजर रखते हैं और काफी सरफराज से काफी फैन भी रह चुके हैं। अभी भी मौजूद हैं यकीनन। कैसे हैं आप काजी? कैसे हैं फरीज? ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। बिल्कुल सही कहा आपने, सरफराज का फैन है और रहेंगे, एंड व्हाई नॉट। बिल्कुल। he's done so. So I guess before we move talk about the team and सरफराज काजी, I think अगर आप मैंने जिक्र किया कि एक टीम का 8 साल से एक ही कोच और एक ही कैप्टन रहा है। नाउ क्वेटा की अगर हम पहले 4 साल की परफॉर्मेंसेस देखें, उन्होंने 3 फाइनल्स खेले और एक टाइटल भी जीते वो। लेकिन पिछले 4 साल से इवन दो उनकी टीम ऑन पेपर अच्छी खासी स्ट्रांग लगती थी, वो कुछ परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए। इनफैक्ट लास्ट 2 सीजन तो वो टॉप 4 में भी नहीं आए। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके जो ओनर हैं, ओनर्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, नदीम उमर वगैरह, वाइल उनकी डोमेस्टिक टीम में काफी उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी डोमेस्टिक टीम भी थी उमर एसोसिएट्स की। मे बी इन अ परफॉर्मेंस इंडस्ट्री दे आर नॉट कट थ्रोट इनफ, एंड वो लॉयल्टी के चक्कर में वो कोई चेंज करने से हेजिटेट कर रहे थे। तो डू यू थिंक दैट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म? I think it's fair to first start by saying that Quetta is perhaps the new Karachi King of the earlier seasons, because if you recall, Karachi King तो पहले कुछ सीजन क्वालिफाई करना क्या जीतना भी मैच उनके लिए मुश्किल होता था। जी। तो क्वेटा पिछले 4 सीजन से, जैसे अगर आपको याद हो, आईपीएल में केकेआर के साथ ये इशू था। वो पहले कुछ सीजन्स तो कभी क्वालिफाई तो मुश्किल, बाद मैच ही बहुत मुश्किल से जीते थे। तो क्रिटिसिज्म फेयर है, बिकॉज देखिए, इन पिछले 4 सालों में सरफराज के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो कप्तान थे, कप्तान से हटाए गए, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो टीम में जगह ही नहीं उनको मिली। तो ऑब्वियसली दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन एनीवन्स पर्सनल गेम। आप मैच प्रैक्टिस उस तरह की नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे, जो क्योंकि पीएसएल, मतलब एटलीस्ट मेरा मानना तो ये है कि पीएसएल पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इट्स वन ऑफ द बेटर लीग्स जी। आउट देयर। अभी आप नोटिस करें कि 3 लीगें और स्टार्ट हो रही हैं। एक तो चली रही है आईएलटी दुबई में, फिर SA 20 की लीग भी स्टार्ट होने वाली है, और पीएसएल। तो आई थिंक बड़ा पॉजिटिव चेंज है। सरफराज हैज हैड अ गुड रन, 8 साल हो गए उनको। अब वो पाकिस्तान भी चले गए हैं, तो और मुझे नहीं लगता कि अब उनका कोई पाकिस्तान टीम में भी नेशनल लेवल पे अब कोई रोल रहना है। आई थिंक ही हैड अ रीजनेबल ऑनरेबल नहीं, कम बैक। आई आई उन्होंने एग्री विद कुछ ऑल ऑफ दैट काजी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चेंज एक आध साल पहले ही हो जाना चाहिए था अगर परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी? देखिए, बात वही है कि अगर आप पहले 4 सीजन देखो सरफराज की कप्तानी के अंदर, क्वेटा की परफॉर्मेंस, तो इतना तो आई थिंक उनका बनता था कि उनको इतना इतना ट्रस्ट किया जाए। एंड आई एग्री, लास्ट सीजन की तो परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो पार थी। बिल्कुल। दे हैड अ रियली टफ टाइम, कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ये देर आए बट दुरुस्त आए, और सही फैसला और किया है। स्पीकिंग ऑफ देर आए, कुछ ज्यादा और ही देर आया, बिकॉज इन्होंने ये चेंज कैप्टनसी का टूर्नामेंट शुरू होने से 4 दिन पहले अनाउंस किया है। तो जब ट्रॉफी अनवेलिंग हुई है 6 दिन पहले, तो सरफराज खड़े हुए थे उसमें। सो अगर उसने आपने सरफराज, चेंज करना है, देन यू माइट एज वेल डू इट अ बिट अर्लियर, व्हिच इज अगेन आई डिडंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट। I think it's just an issue of timing, because I think there was also issues with the PSL because of the general elections being held जी in जी Pakistan. They weren't really sure वो time same होना ही नहीं होना। तो I think बस उसकी वजह से, and also not to mention PCB का चेयरमैन का इशू तो हमेशा ही रहता है। जी। तो अब आप फिर देख रहे हैं एक नया PSL और एक बिल्कुल ही नया चेयरमैन, पता बिल्कुल। नहीं कितने सालों के लिए है, बट अब जो भी बल्कि है उसके उसकी अलावा वजह से इस वक्त जो हमारे चेयरमैन है, वो इस वक्त अभी भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं। सिर्फ चीफ 120 मिनिस्टर भी मिलियन है। लोगों के वो चीफ मिनिस्टर हैं। वो तो और थोड़ी सी मल्टीटास्किंग करनी पड़ी है उनको। और, और हो सकता है कि वो शायद कुछ अरसे के लिए रहें भी, क्योंकि जी, अभी कोई अभी कुछ गवर्नमेंट का समझ तो नहीं आ रही। पता नहीं सो अच्छा, आई गेस क्या हो मूविंग सकता है। moving on now, I guess. So let's see where they're going now. I like the appointments Quetta has done. Shane Yeah. Watson, obviously, probably one of the biggest stars to play in the PSL also. इस वक्त वो पिछले 2-3 Yeah. सीजन से दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच हैं आईपीएल में, जो पॉन्टिंग जिनके हेड कोच हैं। सो ही हैज अ टियर 1 कोचिंग एक्सपीरियंस। ही इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड ब्रॉडकास्टर एज वेल। कमेंट्री वगैरह में नजर आते हैं। अगेन पीएसएल से वाकिफ हैं, क्वेटा से बहुत खेले हैं वो। So he is very familiar with the setup. जी। Riley Russo is the highest scorer in the PSL, more than anyone, scored more than anybody else. Very successful. उनका 45 की एवरेज है, 170 की स्ट्राइक रेट पे वो पीएसएल में बैटिंग करते हैं। सो क्लियरली अ वेरी गुड एडिशन। अगेन वेरी फेमिलियर विद पीएसएल। वो क्वेटा से तो पहले खेले, मुल्तान के लिए पिछले कुछ सीजन खेले में वो। हाउ डू यू सी दीज टू अपॉइंटमेंट्स?
आई थिंक वॉटसन इज अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट, बिकॉज देखें वॉटसन की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ही हैज एक्सपीरियंस इन द पीएसएल। टू, ये जो मुझे लगता है फैसला भी जो है, जो कैप्टन चेंज करने वाला, ये भी वॉटसन की तरफ से ही आया है। And I think it's a welcome change because जी Riley Russo is perhaps in the form of his life. पिछला सीजन आप देख लें और पिछले कुछ उसके इंटरनेशनल लेवल पे आप परफॉर्मेंसेस देख लें, जी तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव. इट विल लिफ्ट द टीम अप एंड आई डोंट थिंक सरफराज शुड बी रियली अफेक्टेड बाय इट. इनफैक्ट आई थिंक सरफराज उसको बहुत अच्छा सप्लीमेंट करेगा बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। एक्सपीरियंस, वो साथ मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. एंड हम्म, वॉटसन अगेन कमिंग बैक PSL and him coaching now, I think it's wonderful. It या really puts five stars that the PSL needs at this time. मैं कहीं पढ़ But रहा था sorry, कि पीएसएल में कई सवाल उठते हैं कि जी फॉरेन प्लेयर्स हमारे पास टियर वन है कि नहीं, तो वो हो ना हो, बट कोचेज हमारे पास डेफिनेटली टियर वन जो है काफी सारे इस वक्त आ चुके हैं पीएसएल में इंटरनेशनल लेवल के। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं. अगर आप देखें, आई मेंशन्ड अभी कि अब ILT T20 भी चल रही है और अब ऐसे T20 भी आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है. ऐसे T20 एक्चुअली और खत्म हो गया है, एक हफ्ता पहले फाइनल हो गया इसका। बट आप देखें, सॉरी हाँ, IPL शुरू होने वाला है, तो जी अब आप देखें ये बहुत जरूरी है कि ये वाला सीजन PSL का सक्सेसफुल जाए. इट्स एब्सोल्युटली रेलेवेंट बिकॉज अब PSL एक ब्रांड बन गया था. इट वाज द सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड. ये जरा ILT T20 उसकी वहाँ फॉलोइंग काफी हो रही है. ऐसे T20 का लाइक यू सेड अभी अच्छी खासी फॉलोइंग थी, लास्ट वीक ही जी खत्म हुआ है. IPL की तो होती ही है. जी तो बिल्कुल। ये एडिशन वुड रियली हेल्प एंड आई जी रियली जी होप इट लिफ्ट्स दिस. या सो आई गेस इफ यू लुक वेरी क्विकली लुक एट लास्ट ईयर, सो अगेन क्वेटा की परफॉर्मेंस खास नहीं थी। उनके हाईएस्ट विकेट टेकर नवाज थे जो अब टीम का हिस्सा नहीं है, ही टुक 9 विकेट्स। देन हसनैन वो द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जो मौजूद हैं, एंड विद द बैट गप्टिल वाज द बेस्ट बैट्समैन, लेकिन अगेन ही इज नॉट पार्ट ऑफ द साइड एनी मोर। जेसन रॉय वाज आल्सो गुड, ही इज स्टिल देयर। मैं आई व्हाट आई डू इज आई क्विकली पुट अप द स्क्वाड नाउ। क्वेटा का स्क्वाड, दिस इज प्रॉब्ली द वन प्रीव्यू आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट डूइंग, बिकॉज मैंने अभी 5 प्रीव्यूज में कर चुका हूँ, और ये वो टीम है जिसकी मुझे देख के लग रहा है कि स्क्वाड एक्चुअली स्ट्रांग लग रहा है। वेदर दैट ट्रांसलेट्स इनटू परफॉर्मेंसेज ऑन द टीम और नॉट, वो देखना पड़ेगा। बट राइली रूसो कैप्टन है, विल स्मीथ हु इज अगेन एन इंग्लिश वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, जेसन रॉय है, रदरफोर्ड अगेन हु डज क्वाइट वेल in IPL and in PSL now, South Shakil local हमारे हैं, फिर उमर यूसुफ अगेन ही स्कोर्ड 120 of 80 balls last year. देन सरफराज हैं, ख्वाजा नाफे हैं, बिस्मिल्लाह खान हैं, एक्सेट्रा। बस मोहम्मद वसीम जूनियर आ गए हैं, अकील हुसैन इज स्पिनर ऑलराउंडर, यू कैन कॉल हिम दैट। फिर मोहम्मद आमिर हैं, फिर लोकल हमारे फास्ट बॉलर्स भी डिसेंट हैं। देखिए मोहम्मद आमिर हैं, सुहेल खान हैं, हसनैन भी हैं, फिर अबरार और उस्मान कादिर हैं। पाकिस्तानी दो स्पिनर्स होना बड़ा मुश्किल काम है आजकल दो हैं आपके पास। तो हाउ डू यू सी द स्क्वाड ओवरऑल? I'm actually very excited for this squad because at least like you said on paper ये तो बहुत ही strong squad है. देखें आप माने ना माने, मोहम्मद आमिर is now a specialist T20 bowler. He's done well for Karachi Kings and the other teams over the last few seasons. और अभी ILT में भी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है. इनफैक्ट एक टाइम पे तो वो और शाहीन दोनों एक साथ बॉलिंग ओपन कर रहे जी थे and they had like जबरदस्त spells. तो सोहेल खान I'm not so sure about because I think he's at the end of his career. But Mohammad Amir, Abrar Ahmed, Mohammad Wasim Jr., who have always rated very highly because I जी think ये वो ऐसे बॉलर हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे बॉल थोड़ी सी भी पुरानी होती है तो ही हैज द एबिलिटी टू रिवर्स स्विंग इट एंड ही इज गॉट वेरी डिसेंट पेस. अंडररेटेड से बॉलर हैं, पाकिस्तान लेवल पे कम खेले हैं बट जब भी खेले हैं परफॉर्म किया है. जी और सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज जो इनका इस साल होगा ना, वो अकील हुसैन का होगा. अकील हुसैन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से. वेस्ट इंडीज हारी है 2-1, बट इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी. इन्होंने उन विकेट्स पे स्पिन कराए, तो ये तो हमारी विकेट स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं. आई थिंक ही इज अ वेरी डिसेंट रिप्लेसमेंट ऑफ मोहम्मद नवाज फ्रॉम लास्ट ईयर. या मोहम्मद नवाज इनके लिए इनके रेगुलर थे क्वेटा के, वो उनके लिए कभी बॉलिंग ओपन भी करते थे. बट आई थिंक अकील हुसैन विल प्ले दैट रोल. ही विल बी व्हाट इमाद वसीम डज फॉर कराची किंग्स. या ठीक है, वो जरा कप्तानी के रोल में करते हैं बट ही मोस्ट सर्टनली हैज द एबिलिटी. ही कैन स्पिन द बॉल लाइक यू सेड. राइली रूसो an absolute form of his life. Will Smith specialist, जेसन रॉय तो हमें पता ही है कितने तबाही बैट्समैन है. और सऊद शकील से मुझे बहुत उम्मीद है. सऊद जी शकील हैज हैड अ वेरी गुड लास्ट इंटरनेशनल ईयर, तो आई सी नो रीजन व्हाई. एंड लाइक आई सेड, सरफराज अगर कीपिंग कर रहे हैं तो उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का, 8 साल से इस टीम की क़यादत करी है, तो कोई रीजन नहीं आ रहा कि इस साल
अबरार, आमिर, वसीम के साथ ये लोग एक फोर्स टू रेकन विद नाउ। बिल्कुल। And by the way, the other candidate for captaincy was apparently South Shakil. So जो internal discussions हुई हैं इनकी, जो चीजें leak हुई हैं, so the other option was South Shakil. But and I think I would probably be happy if they give it a couple of years and then go towards him and see how he develops in this format, right? Because हमने ज्यादा उनको ODI में या टेस्ट मैचेस में देखा है, T20 में तो ज्यादा देखा भी नहीं है at a tier 1 level. But it could be an interesting option for them in the future. मेरा मेरा बस थोड़ा सा व्यू डिफरेंट। मैं कह रहा था कि अगर आप देखें, सऊद शकील आपके रिसेंटली कंक्लूडेड टेस्ट सीरीज में वाइस कप्तान थे इस दफा मसूद के साथ। तो अगर उन्होंने उस लेवल पे, और ठीक है, इट वाज नॉट अ ग्रेट सीरीज फॉर पाकिस्तान, वी गॉट क्लोज टू विनिंग सम मैचेस, बट इट मे नॉट हैव बीन अ बैड आइडिया टू मे बी ट्राई आउट दिस सीजन। बट ठीक है। माय थिंग इज कि देखें, अभी तो वो उनको एक आध सीजन दे दें, अपनी जगह T20 फॉर्मेट में बना लें वो पहले, कुछ अभी तो वो पहली दफा शायद ही हैजंट रियली हैड अ रन इन द PSL, फॉरगेट अबाउट द पाकिस्तान टीम इवन। So I guess if he has a good season, then because Riley Russo is also a senior player, I don't think he's going to be captain for that long. Yeah, I think Yeah, fair call then with yeah. Riley Russo, but it's just If that I अपने player if I look at this जी team, right? So like I think Roy and Russo at the top are probably at top three with two batsmen as strong as any in the PSL. They're very strong, both of them. उसके अलावा I think the local quick start contingent भी आपने जिक्र किया, मोहम्मद वसीम, juniors, Hasnain and Mohammad Amir, backed up by Sohail Khan if he need yeah. one. I think it's a pretty strong local contingent without using a foreign player quota है। और उसके बाद स्पिन भी इनके पास देखें, अबरार भी हैं, उस्मान कादिर भी हैं लोकल में, एंड देन अकील हुसैन भी हैं। So it looks like they have a nice जी बैलेंस्ड साइड। मुझे सच कोई इनके स्क्वाड में, हर मैंने जो प्रीव्यू किया, कोई ना कोई वीकनेस नजर आती है मुझे यहाँ पे, सच कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही। मे बी लो ऑर्डर बैटिंग में कुछ है कि आप कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर जितना एक्सप्लोसिव है उतना लो ऑर्डर मौजूद है कि नहीं, दैट कुड बी अ क्वेश्चन मार्क। आई विल नाउ पुट अप द 11 एंड आप मुझे बताएं आपके ख्याल में, वुड यू डू यू थिंक दिस 11 is the one you want to go with, or would you suggest any changes to this 11? So I've got Roy and Umair Yusuf at the top, Russo at 3, Rutherford at 4, Shakil at 5, Sarfaraz at 6, and then uh, Wasim Junior, Amir Hasnain, and Abrar. Sorry, the one name I'm missing here is Akil Hussain, जो मैंने miss कर दिया, but Akil Hussain also Sarfaraz के yeah. आगे या पीछे he will be there. I mean, I was going to start anyways with the bowling. I would have added, you rightly mentioned, Akil Hussain. So, but in the bowling, you see, if you're playing Akil Hussain, Abrar Ahmed, those are two spinners. Then you've got three genuine fast bowlers. जी Pakistani wickets में if it was me, तो मैं तीन स्पिनर खिलाता और दो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाता, because देखें, if one person is to have a bad day, then you have someone like Saud Shakil who can fill in for those 2-3 overs. Saud Shakil is a decent left armer. He can yeah bowl enough. yeah. Oh, lineup is fine, but in my opinion, it would have been. I mean, I would have added one more spinner. So I would have had Usman Qadir in the team. He's Interesting. had a pretty good season, the last one as well. He's a genuine leg spinner. He understands these conditions well. He plays the local T20 league as well. So I would, maybe have bench Mohammad Hasnain and bring Usman Qadir in. So Because you see, if you just to be clear, you saying कि you would play all three of Akil Hussain, Abrar Ahmed और उस्मान कादिर, तीनों को 11 में खिलाएंगे? तीनों को 11 में खिलाएं, क्योंकि आपकी बैटिंग मोहम्मद वसीम तक तो है ना। मोहम्मद वसीम कैन इज आई वुड कंसिडर एन ऑलराउंडर। T20 में वो बैटिंग कर ही लेता है। तो अगर आपके मोहम्मद वसीम तक बैटिंग नहीं चलनी है, तो फिर नीचे वालों ने आके 100 रन तो बनाने नहीं है। तो इफ यू कांट बैक अप, यू कांट स्कोर इन द फर्स्ट 7, देन देयर इज रियली नो पॉइंट। T20 इज ऑलवेज अ बॉलिंग गेम। इफ यू हैव 3 क्वालिटी स्पिनर्स, डोंट यू थिंक हैविंग सिर्फ दो फास्ट बॉलर से जाना काफी रिस्क नहीं है? इट्स वेरी अनयूजुअल आल्सो, आपके टीम तीन के साथ तो जाती है आमतौर पे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसलिए 3 खिलाएं, बिकॉज यू ओपन द बॉलिंग विद अकील हुसैन, एंड देन अबरार एंड उस्मान कादिर टू बैक इट अप, एंड वसीम, आमिर एंड वसीम आर गुड इनफ टू गो 4 ओवर्स ईच। वो लेट आएंगे, रिवर्स स्विंग एलिमेंट भी होगा अगर कोई हुआ, क्योंकि देखिए रिवर्स सिर्फ उस पिच पे नहीं होती ना, वो तो सारे माहौल पे होती है कि विकेट कितनी ग्रीन है, ग्रास कितनी ग्रीन है, बॉल कितना रफ हो रहा है, कितना ज्यादा रफ हो जाएगा 10-15 ओवर बाद। तो इतना पाकिस्तानी पिचेस और कंडीशंस का आपको पता है, 15 ओवर तक बॉल इतनी रफ हो जाती है कि कोई अगर एलिमेंट होना होता है तो ये दो बॉलर्स हैं उसके लिए। और बाकी सारे 3 टॉप लाइन आपके पास फ्रंट स्पिनर्स हैं, आप उनको बैक करें, उनको पिलाएं,
They will always cause a problem. And obviously, if it doesn't work out, Hassan is there, Yeah. Sohail Khan is there. Mixed Hmm. match chalta rahega. But I would include Usman Qadir in the lineup. Interesting view. By the way, those of you watching, अगर आपका व्यू है कि इन्होंने क्वेटा ने क्या 11 खिलानी चाहिए, तो प्लीज लीव अ कमेंट. उसके अलावा लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. I guess before we wrap up, Kazi, आपकी prediction क्या है? Where do you see Quetta finishing in this tournament? They haven't qualified in the last two for the last four, so. I mean, look, with the kind of lineup that they're fielding now, so definitely qualifiers ke liye, I see them qualifying. You know, I mean, whenever Quetta is in the final four, it's always a very interesting tournament. But it's not going to be easy. All the teams are peaking. The PSL has actually grown in the last 2-3 seasons. Yeah. It's really become interesting. वो कोई 200 वाले scores नहीं होते हैं, but 150 पे भी defend हो रहे होते हैं. Yeah. And it's interesting. It's always a lot of fun because like this is why I'm stressing कि Quetta Gladiators अपने 3 frontline spinners खिलाएं because they change the game. Yeah, they're always there. And if we are to see Abrar grow as a spinner, you know, Bechara, he couldn't do anything on the Australian tour. He got injured. Let's back him up. Let's play him. I mean, purely from a Pakistan point of view, मैं चाहूंगा कि अबरार को बहुत सारे मैचेस मिलें ताकि हम देख सकें कि वो T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से I would like to see him. और एग्जैक्टली क्यों ना करें भाई, आफ्टर ऑल पाकिस्तान सुपर लीग है, व्हाई शुड आवर प्लेयर्स स्टेप अप एंड यू नो रूस्ट, लाइक यू सेड. अब T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है जून में, तो अच्छी बात है वो आगे बढ़ के खेले. उस्मान कादिर को भी खेले, एंड आई थिंक उस्मान कादिर विल आल्सो बी अ कंटेंडर फॉर द T20 वर्ल्ड कप. व्हाई शुडंट ही बी? हमने एक प्रीव्यू एपिसोड की थी, उसमें मैं, इमरान असलम नहीं, मैं, उमर और उमैर काजी थे. हमने स्क्वाड पे तो 14 लोगों पे तो हम लॉक हो गए, बट स्पिनर्स में हमको कोई नाम ही नहीं आ रहे थे, तो हमने इवेंचुअली हमने स्लॉट छोड़ दिया था कि बेस्ड ऑन द PSL पे छोड़ दिया था हमने, वो स्पिन स्लॉट था एक, राइट? सो लेट्स सी. अब स्पिनर को जो भी कोई, आई थिंक अपॉर्चुनिटी है हर पाकिस्तानी स्पिनर के पास, जो भी परफॉर्म अच्छा करता है, दे कुड बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड. अबरार और उस्मान कादिर तो मेरे ख्याल से हमेशा फ्रंट कंटेंडर्स होने चाहिए. आई डोंट नो व्हाई वी बीन मिसिंग आउट और नॉट प्लेइंग उस्मान कादिर इन द लास्ट ईयर और सो. हमने उसको बिल्कुल मतलब अंडर यूज किया है, खिलाते ही नहीं है. जब मोहम्मद नवाज को आप बैक, मोहम्मद नवाज को परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ना उससे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, तो इफ यू हैव दीज टैलेंटेड स्पिनर्स, इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्वेटा के लिए कि ये अगर इंशाल्लाह इनको खिलाएं फ्रंट में तो पाकिस्तान के लिए बेहतर. Okay, so I guess I would need a more specific prediction. Top 2, top 4, where do you see them finishing? I think top 4 qualifying, and if they make it to the qualifiers, then yes, within the top 1 or 2. I guess मेरी prediction में यही होगी, guys. I think with this squad and these changes, अगर top 4 में ना आए तो काफी disappointing होगा. लेकिन I think top 4 में आएंगे और probably top 2 के लिए भी challenge करेंगे. I would say they'll probably end up finishing 3rd, but let's see. Hopefully they'll have a good season. Islamabad are always tough contenders. And Lahore, of course. Karachi का पता नहीं होता. Lahore is, of course, Lahore is there. Chale, good stuff. Thank you for being on the show, Qazi. And PSL mein, inshallah, we'll be having you at different points. So for those of you watching, if you have a view again on where you think Quetta will finish, please leave a comment and stay tuned to the shiny side.